किसी को उतना सर पे मत चढ़ाओ कि वो आपके सर पे चढ़ के मूतने लगे। अगर मैं किसी भी प्लेयर की बात कर रहा हूँ इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी ही होगी कि लिवरपूल के रिप्रेजेंटेटिव्स एज़ वेल एज़ बार्सिलोना के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मार्कस रैशफोर्ड के प्लेयर कैंप से कॉन्टैक्ट बना चुके हैं। कम्युनिकेशन हो चुका है विद रिगार्ड्स टू अ पॉसिबल मूव इन द समर। क्या ये न्यूज़ क्रेडिबल है, और इज इट जस्ट एन अटेम्प्ट टू बुली द क्लब इनटू एक्सेप्टिंग मार्कस रैशफोर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट डिमांड्स एंड गिव हिम अ न्यू lucrative contract? This deserves to be discussed because this is news which is quite frankly unacceptable to me as a Manchester United fan. So let's get started. Just before I move on to Marcus Rashford, I just want to discuss जो current situation है, current जो scenario है हमारे club के academy graduates का, not the young ones but the ones who have actually established themselves as first team regulars. I'm talking about Marcus Rashford, I'm talking about Scott McTominay, and I'm talking about Jesse Lingard. स्कॉट मैकटोमने की मैं अगर बात करूं, शुरू करूं, if you talk about passion, I wouldn't doubt his passion. If you talk about his discipline, yes, he has discipline. But if you talk about his competency, is he fit enough to wear the Manchester United badge? Is he fit enough to be a first team starter, let alone a player in a Manchester United team? The answer is a strict no. Because आप लोगों ने performances देखी होगी इस season, whether it's the Champions League, whether it's the Premier League, barring a few performances, say against Leeds and Burnley, he has been absent from every match. He has failed to establish himself as a makeshift CDM, as a proper central midfielder as well, because uska skill set is not just there. It's just not there. He's not a number 6. He's been tried numerous times to fit in as a number 6, but he just doesn't have the skill set, and that lack of skill set has cost us on so many occasions. So I would say Scott McTominay, is he a good academy graduate, good enough to be playing as a United first team starter? No, he's not. जैसी लिंगार्ड की बात करूं, he's been at this club longer than Scott McTominay has. 28-29 का हो चुका है वो. Ideally should be in his peak right now, but he's barely getting any game time. You see, अगर उसका जो most memorable spell at United है जो रह चुका है, is under Jose Mourinho, जिसका वो पर्पल पैच आया था, where he was scoring left, right and center for a good 3 to 4 months. But उसके बाद से there was a phase where he didn't get a goal or assist for more than a year, and if I'm not wrong, around 13 to 14 months वो फेज आया था उसका. उस फेज को फॉलो करते ही वही, because there was no space for him in the squad, Bruno had displaced him. He didn't capitalize on the opportunity before Bruno came. He was moved on to West Ham, where ideally जिसने अच्छा फॉर्म डिस्प्ले किया, which got him into the England team as well. He should have decided to make that move permanent and establish himself at a team where he's going to be starting and he's actually playing well. क्या उसने वो करा? नहीं. क्या उसमें does that show ambition? No, it shows a lack of ambition. It shows कि भाई आप you're comfortable just earning a lot of money and happy with your commercial image at Manchester United, where you're not even playing as much. आपका career slowly kill होता जा रहा है. He didn't go. So I would, और उसकी ability भी can be called into question. His mentality can also be called into question. Now I move on to भाई one and only Marcus Rashford. तो भाई लिवरपूल के साथ लिंक हो रहे हैं भाई. तो फॉर एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बी लिंक्ड टू लिवरपूल इज कैटास्ट्रोफिक. इट इज कंप्लीटली अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट. अगर आप मेरे से पूछो कि क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्कस रैशफोर्ड को लिवरपूल मूव करना, नो आई डू नॉट. बट क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दिस न्यूज टू बी जस्ट एन अटेम्प्ट टू गेट द क्लब लिसनिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट डिमांड्स, बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है 2023 में. barely over 15 months left till his contract expires, and at the current situation उसकी performances अच्छी नहीं चल रही है. He knows that he is not in a dominating position to ask for a contract, because यार आप किस basis पे पूछोगे, क्या आप perform कर रहे हो? नहीं. और that is the sole criteria for any player to be in the dominating position. अब मैं इस समय कौन player हो सकता है dominating position में in world football? A best example is Mo Salah. भाई he's been performing not just this season, last season, the season before that, ever since he's arrived at Liverpool. He's been the standard bearer of performance. तो क्या भाई अगर सलाह मेरे इस समय यूनाइटेड में होता और सलाह कह रहा होता कि भाई तुम मुझे को नया कॉन्ट्रैक्ट दो वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा, आई वुड से दैट इज कंप्लीटली वैलिड. भाई उसके पास पॉइंट है ऐसा बोलने का, बिकॉज उसने भाई लिवरपूल को टाइम एंड अगेन हेल्प किया है. लिवरपूल के टाइटल में, लिवरपूल की चैंपियंस लीग में, लिवरपूल के सुपर कप में, लिवरपूल के क्लब वर्ल्ड कप में उसका हाथ रहा है कहीं ना कहीं. तो ही इज इन अ पोजीशन. But can I say the same about Marcus Rashford? No, I cannot, because we have barely won a trophy. We won an Europa League. Was he instrumental in that? No, he wasn't. We've won an FA Cup. Was he instrumental in that? Not so much. Well, we won a League Cup. Was he instrumental in that? Not so much. And there has been 5 years since that happened. उस 5 साल में क्या हमारे को, when we've been down in the dumps, has Rashford helped us? No. We've been down in the dumps. We've been by derbies में, important matches में Rashford has scored. That night in Paris, he did score. He scored in the Manchester derby. He scored on numerous occasions in the Champions League group stage as well. But ultimately वो inconsequential थे ना. क्योंकि आप जैसे अब नाइट इन पेरिस की बात करो, उसके बाद बार्सिलोना के साथ हमारा जो मैच था उसमें रैशफोर्ड डिडंट डू एनीथिंग.
ठीक है? एंड वो भी आप लोगों को याद ही होगा। अब उसके बाद मैं अगर अपने ग्रुप स्टेज की बात करूँ पिछले साल के चैंपियंस लीग की, तो भाई ही स्कोर्ड द हैट्रिक अगेंस्ट लाइप्जिग, ही स्कोर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल अगेंस्ट पीएसजी, बट अल्टीमेटली उसके बाद जब व्हेन यू नीड योरसेल्फ टू पुश ऑन एंड सीमेंट योरसेल्फ एंड गेट अस इनटू द नॉकआउट स्टेज, वाज ही एबल टू डू दैट? नो, ही वाज़न्ट। तो मेंटालिटी, कॉम्पिटेंसी, मैं रैशफोर्ड की कॉम्पिटेंसी डाउट नहीं करता हूँ, ही इज अ ग्रेट प्लेयर यार। उसके पिछले सीजन देखो, डबल डिजिट्स में उसके असिस्ट नंबर थे, उसके गोल्स थे, पिछले सीजन भी अच्छे थे, हेल्दी नंबर ऑफ गोल्स ही वाज कंट्रीब्यूटिंग, 20 गोल्स पिछले सीजन थे, 22 गोल्स लास्ट सीजन थे, व्हिच इज वेरी गुड नंबर्स फॉर हिज एज। इफ दिस सीजन ही पुश्ड ऑन एंड इवन गॉट दैट सेम नंबर्स, आई वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बट पिछले सीजन भी बहुत ऐसे ओकेजन थे जिसमें रैशफोर्ड वाज नॉट परफॉर्मिंग, बट ही वाज एट द राइट प्लेस राइट टाइम, बिकॉज ही वाज बीइंग प्रोवाइडेड द सर्विस एंड ही वाज फिनिशिंग हिज चांसेस। बट इन टर्म्स ऑफ, आई रिमेंबर लास्ट सीजन एज वेल, कितनी बार ऐसी कॉन्वर्सेशंस हुई थी, कितनी बार ऐसे क्रिटिसिज्म्स हुई थी कि रैशफोर्ड है, he's not playing for the team, he's looking for to do flashy things too much. And if I could talk about the situation this season he's been doing the same thing. He's been having those disastrous performances, bad performances, but now he doesn't have the output to match it as well, क्योंकि वो contribute भी नहीं कर रहा है. तो two negatives in this case do not combine to make a positive, and it becomes abundantly clear कि रैशफोर्ड इस समय एक टीम के लिए लाइबिलिटी है. रैशफोर्ड इस समय एक लाइबिलिटी है, बिकॉज आप रैशफोर्ड को आप सोचो कि भाई आप क्या, ही डज ही डिजर्व टू बी स्टार्टिंग ओवर एलांगा? नो, ही डजंट. You don't have Greenwood, but if Greenwood, अगर आप situation ऐसी बना लो, if Greenwood hadn't, if the off the field issues did not unfold as they did, Greenwood was ahead of Rashford. तो ideally हमारे जो academy graduates, forward players academy के, he's the lowest in the pecking order when it comes to being a first team regular. But is that actually happening? He's playing regularly where he doesn't deserve so. And क्या किस बेसिस पे खेल रहा है? बस सिर्फ एक चीज है कि वो एक यूनाइटेड, he has a lot of pace, and on the counter he's a very very lethal player. But bhaiya, pace is one thing, but you have to be in the right positions to capitalize on that pace, to exploit your pace. You have to be having something at the end of it. अब एम्बापे के पास भी बहुत पेस है, बट अगर एम्बापे was not producing for PSG, if he's not, तो मैड्रिड उसको क्यों खरीदना चाहती? क्यों? क्या क्या फ्रांस कैसे वर्ल्ड कप जीती? फ्रांस क्यों उसको अपना मेन मैन रखती? He has the end product to match his other skill set, जो उसका जो raw pace है, that blistering pace he has. But Rashford इस समय he has the blistering pace, but he doesn't have anything at the end of it. आपकी ड्रिबलिंग इतनी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन है, आपकी ड्रिबलिंग इतनी ऑन एंड ऑफ रहती है, you're often trying to do the wrong move, your decision making is all over the place, you don't pass at the right time, you do not shoot at the right time. तो if you're doing so many mistakes, तो clearly deserve. अब इसमें रैशफोर्ड के साथ क्या दिक्कत अब है कि भाई रैग्निक, आई ट्रस्ट रैग्निक इस मामले में कि रैशफोर्ड को वो बिठा के समझा रहा होगा, भाई तेरे गेम में ये कमियां हैं, तो ये कमियों को सही कर, दिस इज व्हाट यू नीड टू इंप्रूव अपॉन, एंड इफ इज बीन गिविंग अ चांस, तो एक तरीके से आपको हार्श ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. अगर हार्श ट्रीटमेंट मिल रहा होता तो भाई आप अभी समय टीम में होते ही नहीं, यू वुडंट हैव बीन पार्ट ऑफ द स्क्वाड, लेट अलोन द बेंच. तो उस समय if Rashford is being treated unfair, no, he's been treating over fairly, if you actually look at it. तो भाई Rashford को इस समय he should get his act together, and what ideally he should be doing is कि भाई मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ, I deserve to be dropped, and now I should be the one who should be actually focusing and getting my act, getting my जो off the field distractions, जो on the field distractions है उनको हटा के, I just need to simplify my game and be a team player. Rashford के एक्चुअल माइंडसेट, जो आइडियलिस्टिक माइंडसेट यही होना चाहिए, बट इज दैट द केस? नो. आप न्यूज फैला रहे हो आप कि भाई मैं कि आप फैब्रिजियो रोमानो से आपने सुना ही होगा कि ही माइट बी कंसीडरिंग अ मूव, इज नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन. भाई क्लब क्या है, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद योर सिचुएशन, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट ऑन व्हाट बेसिस आर यू नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन यार? यू आर एक्चुअली गेटिंग मोर देन यू डिजर्व एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट. दैट जस्ट शोज कि आप इस समय कितना एंटाइटल्ड हो. आप रोनाल्डो को देखो, रोनाल्डो भी छोड़ना चाहता है क्लब, बट इज रोनाल्डो द वन हुज रोनाल्डो के बारे में कोई भी न्यूज़ सुनी कि रोनाल्डो माइट मूव टू लिस्बन, रोनाल्डो माइट मूव टू पीएसजी? नो. ये बस आइए कि रोनाल्डो माइट कंसीडर हिज ऑप्शंस, बट इफ वी टॉक अबाउट हिज प्रोफेशनलिज्म, क्या वो कॉल्ड इनटू क्वेश्चन है? नहीं भाई. इस सीजन रोनाल्डो के 18 गोल्स हैं इन 32 मैचेस फॉर अस. ही इज कंट्रीब्यूटिंग नॉट एज मच एज वी एक्सपेक्टेड. उसका भी अभी बैरन स्पेल था जिसमें 10 मैचेस में उसने 1-2 गोल मारे थे. तो आई एम नॉट सेइंग कि रोनाल्डो इज सेटिंग सम सॉर्ट ऑफ टॉप नॉच स्टैंडर्ड, बट इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म मैं नहीं क्लाउड कर सकता उसको. वो मैनेजर के लिए ना क्लब के लिए कोई फालतू के टंटे खड़े नहीं कर रहा है कि आपको जबरदस्ती वी हैव टू रिजॉल्व दैट फर्स्ट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट मैटर्स. सो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट मार्कस रैशफोर्ड सिचुएशन. आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे लेके? बिकॉज आई एम क्वाइट फ्रैंकली वेरी डिसअपॉइंटेड विद द कॉन्स्टेंटली जो जिस टाइप का जो ये डीवा एटीट्यूड जो आके दिखा रहे हैं कि हम तो वी आर वेरी एंटाइटल्ड, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट. एंड इसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड की भी गलती है एंड प्लेयर की गलती तो डेफिनेटली है. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, एंड वुड यू बी ओपन टू लीविंग लेटिंग मार्कस रैशफोर्ड लीव?
क्या अगर एक अच्छी बिड आती है, say around 60 million, 70 million, 50 million, would you be willing to let Rashford leave? Do you think it is a time where we, cut our losses and let him leave? Losses तो क्या ही हुए हैं, academy player है. Let me know in the comment section down below, and I'll catch you guys in the next one. Don't forget to subscribe. We are on the road to 10K, so subscribe करना मत भूलना, and I'll catch you guys later. Bye bye guys.